Bonjour. Hello everyone. Je m'appelle Amir and je m'appelle Amir. That's what we say in French. My name is Amir and today we'll be continuing with our French lesson 2 and that's like DELF A1 DEF oriented. Earlier we studied like lesson 1 and now today is the lesson 2. And in lesson 2 we'll be studying like numbers, verb, être and identity. And so these are our learning objectives. Like we'll count and use numbers 0 to 20. We'll see what is the conjugation of the verb être and how can we use that. Then we will see like how can you introduce yourself in detail and how can you ask and answer the questions like how are you naturally, and then we'll study like some simple sentences that you could use with confidence. D'accord. Merci. So that's about me. Like, and that's we're just doing today the second lesson of Francogate language services, lesson number 2 of DELF A1 Deaf Oriented. So let us first do the quick revision of lesson 1 and French. In French language, there are 26 letters as in English, but 20 consonants and 6 vowels. But in English, there are 5 vowels and 21 consonants. So let us repeat once the alphabets. Please repeat right after me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And French letter H is always silent, and French letter R, it is pronounced from the back of the throat like a gentle gargle. So like as we say air. Then we have a revision of the salutation. Les salutations, that's what we say greetings. Please again do repeat right after me. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Hello. Bonjour. Comment allez-vous? Hello. How are you? Formally. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Bonsoir, madame. Ça va? Hello, madam. How are you? Salut. Salut is for friends like to say hi or bye. We say salut, tu vas bien? Hi, how are you? And for goodbye, formally we say au revoir. And then we say au revoir, tu vas, au revoir, à demain. Goodbye, see you tomorrow. À bientôt. À bientôt et see you soon. We say à bientôt, mon ami. See you soon, my friend. Then bonne nuit. Bonne nuit is good night. We say bonne nuit, dormez bien. Good night, sleep well. Then we have à demain. À demain, see you tomorrow. À demain, professeur. See you tomorrow, teacher. Then we have bienvenue. Bienvenue, welcome. We say bienvenue à Paris. Welcome to Paris. Merci beaucoup. C'est merci beaucoup pour votre aide. Thank you very much for your help. De rien. De rien, you're welcome. We say merci, thank you. De rien, you're welcome. Informally. De rien is you're welcome, but informally. S'il vous plaît. S'il vous plaît is please. And in a formal way of saying please, s'il vous plaît. We say un café, s'il vous plaît. A coffee, please. Excusez-moi. Excusez-moi. Excuse me. We say excusez-moi, où est la gare? Excuse me, where's the railway station? Then we have enchanté. Enchanté, nice to meet you. We say, je m'appelle Ali, enchanté. My name is Ali, enchanté, nice to meet you. Then we have a pronunciation drill as well. So please, I'll say a word and you have to repeat right after me each word 3 times. Bonjour. You can pause the video and you can repeat twice. Au revoir. À bientôt. Excusez-moi. Merci beaucoup. Then we have se présenter. Se présenter is introduce yourself. We say je m'appelle. Je m'appelle. My name is. Je suis. I am. You say je suis étudiant. I'm student.
Il s'appelle, his name is. Il s'appelle Pierre. His name is Pierre. Keep repeating after me, d'accord? Elle s'appelle, her name is, we say, elle s'appelle Marie. Her name is Marie. J'ai un, I'm that many years old. J'ai 20 ans. I'm 20 years old. Je viens de, I come from. Je viens du Pakistan. I come from Pakistan. J'habite à 11. J'habite à Lahore, 11 Lahore. Je parle français. I speak French. Je parle français et anglais. I speak English and French. Je suis étudiant. And for female, je suis étudiante. I am student. Je suis étudiante à l'université. Like I'm a female student in university. Je suis professeur. I'm a teacher. Je suis professeur de français. I am French teacher. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Pleased to meet you. And ravi de vous rencontrer, monsieur. Pleased to meet you. So, okay, you have to repeat these very sentences after me aloud. Bonjour, je m'appelle Ahmed. Je suis étudiant. J'ai 20 ans. Je viens du Pakistan. J'habite à Atak. Enchanté. Now you have to write down your own self-introduction on this pattern. You write like bonjour, je m'appelle, your name. Je suis, j'ai, your age, hein. Je viens de, where are you from? J'habite à 11. Je parle, I speak. So that's a revision checkpoint of lesson 1. You can say, I can say the alphabets. I know 10 plus greetings. I can introduce myself. I know formal versus informal. I can say my age. I can say where I am from. And if you find out any confusion in these very things, you can go back to our lesson 1 as well, or go through the revision activities that we have just done. So now, right now, let's start the lesson 2. So our lessons are always based on the PDF that I do share. Then with that very PDF, I also share one video of each lessons that as you're receiving it right now. So this is the pattern that we do follow. And the third thing that we do is when you just enroll for your French language classes with Francogate, so then I give you a complete customized plans of weekly. Let's say if you enroll for DELF A1 and you continue with three classes a week, 3 hour, each class duration 1 hour. So I'll be giving you 5 hours weekly plan. So if you have to do 5 hours mandatory study, what you have to study, it should not you should be sitting on the YouTube. You should be watching the things that where your learning is very limited, very minimum, and that's not very beneficial. So apart from that, I will be planning the I'll giving you apart from these 5 hours, 3 hours extension activities as well. So if you have more time, you can do that as well. So you have a very systematic and organized each and everything, and in order to you could achieve your CLB 7 in 12 to 16 months. Thank you. So let's start. Les nombres, the counting, 0 to 20. So please just repeat after me. So numbers are very important. So how do we say 0 in French? We say zéro, and 1 we say un, 2, deux. So basically we have 2, 1. As if we have to say one man, we say un homme, and one lady, we say une femme. So if we have to say one and the object is feminine, so there we use une. Okay, so one guy, un garçon, one girl, une fille. So just repeat right again after me. So that was a little technical concept. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Let's repeat one more time from 1 to 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, and from 16 onwards. How do we say 10 in French? We say 10. And how do we say 7? We say 7. So 17 is going to be 10, 7. So what we'll be saying? 17 is going to be 17. And then 18, 10, 8. So it's going to be 18. 19, 10, 9. So 19. And 20 is 20. 20. So let's move onward. So 17 to 19, they are compound, like as I told to you. 10 plus 7, 10 plus 8, 10 plus 9, like 17 is going to be 17, 10 plus 7, and 18, 19, and 20 is 20. So now we have a pronunciation drill. I'll say like the numbers and you will say each number thrice. 1, 2, you can pause the video and you can repeat each number thrice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So let's move forward. So now you have to tell me, how do we say 1 in French? We have a word bank right here as well. 2 in French, 3, 4. How do we say 1 in French? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Let's move forward. The next activity that we are going to go through. So how do we say these very numbers in French? We say 0. How do we say 0 in French? 0, 1. Yes, it is. Yes, it is 1, 5, 5, 7. Yes, 7. 9 is. Yes, 9, 11, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19. Now you can just take out your copies and you do not have to look at the screen. I'll say the words and this is going to be a quick dictation. I'll repeat each word 2 times and you have to write it down on your copy. Do not look at the screen, okay? Are you ready? On dit in French, we say it in French. Vous êtes prêt? Vous êtes prêt if you're a guy. And if you're like a female, we say vous êtes prête? So if you want to say yes, I'm ready, to say oui, oui. Okay, so let's start. I'll say each word twice and you have to write it down. 2, 2, 5, 5, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20. Okay, here it is, my friends. Now you can just check it from the screen. What did you do? If you made any mistake, you can again go through the numbers.
Okay, if you have to talk about the age very thing, we say j'ai, then whatever your age is. Let's suppose if you're 30 or 20, you say j'ai 20 ans, as we have studied till 20. So if you're 20, you say j'ai 20 ans. If you're 5 years old, you say j'ai 5 ans. 18, j'ai 18 ans. Okay, so now you have to again practice all these things in case if you think you need further revision, go over that again. So let's start with the next activity, and we have a new topic here. We are going to see the verb être. Être is an irregular and is the first verb that we are going to go through, and we'll see how can we conjugate the verb être. So basically, we are also going to see what is the conjugation. Because most of the students they get confused with what is conjugation and conjunction. Okay, so what is conjugation? Basically, conjugation is it helps us like who is speaking, who is like the main subject, and in which tense one is speaking. If I just tell you in the more simple words, it basically tells us like, you know, who is speaking, like in it's I, you, he, she, we, they, or one person is speaking, more than one persons are speaking. So this is basically called conjugation. In the very simplest form, if I tell you, like if you just break down the verbs, any verb, like either if it's to speak with like what comes with I, you, he, she, we, they. So this is called conjugation. Okay, and we are going to see the conjugation of the verb to be in present, like as we say in English, I am, you are, he, she is, we are, you are, they are. So as in English, there is one thing. We have only you, but like if we see it in Urdu or in Punjabi or in Hindi, we have informal and formal as well. Like informally, we say tum in Hindi and Urdu, and in Punjabi, we say tu, and then formal, we call it like aap. So in French, what we when we have to say, we see like when we have to say tum or aap, how do we say that? The I, what we say in French, that is je, tum are informal you, tu, he is called il, she, elle, and hum like nu, and aap is called vous like formal you, and plural of male they is called el, and plural of female they is called elle. And if there are group of male and females, we'll use like the masculine el form. So just repeat right one more time after me. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Now the conjugation of to be verb is going to be, it is very important. It is the first irregular verb we are going to go through. You have to learn it the way it is, okay? So there is no formula for that because that's why it's called irregular. So I am, you are, he, she is, we are, you are, they are. Like as in Urdu we can say मैं हूँ, तुम हो, वो है, हम हैं, आप हो, वो हैं. तो how do we say that? हम कैसे कहेंगे फिर then मैं हूँ, je suis, तुम हो, tu es, वो है, il est, elle est, हम हैं, nous sommes, आप हो, vous êtes, वो हैं, ils sont, elles sont. और अगर मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे हों तो फॉर दैट हम फॉर्म जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे मेल वाली फॉर्म ils sont. Voila. So I hope it's clear. So अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. Let's see some examples with être. Like आपने मेरे साथ रिपीट करना है. You have to repeat right after me. अगर हमने कहना है I am student, we say je suis étudiant. You are a teacher. Tu es professeur. He is a doctor. Il est médecin. She is Canadian. Elle est canadienne. We are friends. Nous sommes amis. You are students. Vous êtes étudiants. They are French. अगर वो mixed हैं, males and female, we say elles sont français. They are happy, females. Elles sont contentes. Okay, let's move forward. Now, I'll just say the conjugation of être, and you have to say each one thrice.
आपको हर एक जो इसकी फॉर्म है एथ की कॉन्जुगेशन की आपको 3 टाइम्स रिपीट करनी है। एल से वंस आप 3 बार बोलेंगे। युस्वी, क्यू ए, एल ए, एल ए, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Let's move forward. आगे चलते हैं। Now we have an exercise here. तो अच्छा जी, आपने ये हमारे पास वर्ड बैंक है स्वी, ए सोम, एट सोम। तो आपने इसके साथ फिल आउट करना है। je डैश étudiant। क्या आता है बताएं कि मैं स्टूडेंट हूं। je suis étudiant। voilà। tu डैश professeur। tu es professeur। il dash médecin। Il est médecin। Elle dash canadienne। Elle est canadienne। Nous dash amis। Nous sommes amis। Vous dash étudiant। Vous êtes étudiant। Ils dash français। Ils sont français। Elles dash contentes। Elles sont contentes। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा आगे चलते हैं। आप प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ दैट। अभी ये वाली आप चीजें खुद करेंगे। आपने यहाँ पर रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। लाइक वर्बियां क्या आता है। आई जस्ट गिव यू वन हिंट। पहले वाला मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। वी से सवाबियां, मैं ठीक हूँ। suis je étudiant। एल ए médecin। टू ए प्रोफेसर। आपने इनको रीअरेंज करना है ताकि इनसे करेक्ट सेंटेंस बना सके। ओके, आपको अगर नहीं समझ आ रही तो गो थ्रू द लेसन अगेन। ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच ये वाले सेंटेंसेस हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू राइट डाउन द ट्रांसलेशंस योरसेल्फ। So then we have like again a checkpoint. We say I can conjugate at all 6 forms. I know when to use tu versus vous. I can use être in a sentence. I know il versus elle versus il versus elle. I can translate être sentences. I can say the forms from memory. Okay. सो ये एक थोड़ा सा एक्सटेंशन चैलेंजिंग एक्टिविटी है। अगर आपको लगे कि आपको चीज़ें यू डूइंग इट वेरी इजीली, सो यू कैन डू इट। लाइक आप 5 सेंटेंसेस जो एथ के साथ आपने बनाने हैं। लाइक यू कैन ऐड अ जॉब, नेशनैलिटी और एन इमोशन फॉर ईच। लाइक हमारे जिस तरह एग्जांपल है, एल ए इंजीनियर, शी इज़ इंजीनियर, न्यूज़ पाकिस्तानी, वी आर पाकिस्तानी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगली एक्टिविटी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कि अगर हमने किसी से पूछना है आपका क्या हाल है, लाइक हाउ आर यू, फॉर्मली हम कहते हैं कोमो टेलेबू। एक स्पीकिंग की एक्टिविटी है। तो अगर हम किसी से फॉर्मली पूछेंगे तो हम कहेंगे आपका क्या हाल है, विल से हाउ आर यू, वी से कोमो टेलेबू। और अगर हमने किसी से इनफॉर्मली पूछना है कि तुम कैसे हो, सो वी से कोमो वचू, कोमो वचू। ओके, एंड अगेन और कोई हमारा अच्छा दोस्त है तो उससे हमने पूछना है कैसे हो, विच इज सवा, लाइक हाउ आर यू ओके। आंसर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, सवा बियां, वेरी वेल थैंक यू, très bien merci, pas mal, not bad, comme si comme ça, गुजारा है, ça ne va pas, not well, not good, et vous, et toi, और आप कैसे हैं। देन वी हैव अ मॉडल डायलॉग। तो आपने ये डायलॉग हम पढ़ते हैं, मैं आपको साथ इसकी आपने जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है पर्टिकुलरली वो मेरे साथ रिपीट करनी है। ट्रांसलेशन आपके सामने लिखी हुई है। यू से bonjour, ए को हम फ्रेंच में कहते हैं आ। यू से bonjour, comment allez-vous? B, très bien, merci, et vous? A, ça va bien, merci beaucoup. B, enchanté. A, moi aussi, au revoir। एंड देन हमारे पास ये आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। सवा, अगर कोई सवा कहे तो उसका क्या पॉसिबल आंसर्स है, सवा ही है। कोमो चालिबू फॉर्मली है तो कैसे कहेंगे, कोमो चालिबू कैसे हैं, आप कहेंगे सवा, जुवे बियां, मैं ठीक हूँ, très bien merci, लाइक दैट। कोमो वच्यू, और आप कैसे हैं ऊपर, आप ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर अगेन यू कैन गो थ्रू दैट और वहां से आप देख सकते हैं आपने कैसे कहना है। अगर मैं ठीक हूँ, यू से सवा बियां, आपने कहना है सो गुजारा है, कौन सा ठीक नहीं हूँ, पामाल नॉट बैड।
तो देन वी हैव, ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इनकी आपने ट्रांसलेशन लिखनी है. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. लाइक हाउ डू वी से माय नेम इज अली, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम पाकिस्तानी, आई एम 20 years old, शी इज कैनेडियन. ये आपने खुद करनी है एक्टिविटी. सो देन लेट्स, हमारे पास एक रीडिंग की एक्टिविटी है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसमें क्या करूँगा, मैं थोड़ा इसमें सारे क्वेश्चंस आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ. ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं. आई रीड इट आउट और आंसर्स आप खुद करेंगे. ओके. एंड मीनिंग्स के लिए भी आपने थोड़ी सी खुद एफर्ट करनी है. आ propos de Paul इज लाइक, हमारे पास पैसेज ये है. आ propos de Paul, लाइक अबाउट पॉल. bonjour, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, यू हैव टू रिपीट राइट आफ्टर मी. bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 28 ans, je suis ingénieur, j'habite à Lyon en France, je viens du Bordeaux, je parle français et un peu d'anglais. Ça va bien, merci. Et vous? Okay, so then let's move to the next activity के ऊपर चलते हैं. ये again हमारे पास फिर एक रीडिंग की एक्टिविटी है, that is about à propos de Yasmine, like about Yasmine. Bonjour, je m'appelle Yasmine. You have to again repeat after me, okay? So आपने मेरे साथ repeat करना है. Bonjour, je m'appelle Yasmine. Je suis étudiante à l'université. J'ai 19 ans. Je viens du Maroc. J'habite à Montréal, au Canada. Je parle français et arabe. Je suis très contente d'être ici. Enchantée. सो देन हम नेक्स्ट चलते हैं. दिस इज अ फ्रेंच सॉन्ग, हमारे पास आखिर में है. ये आपने, यू हैव टू रीड इट योरसेल्फ, आपने खुद रीड आउट करना है. इससे इसको वीडियो को पॉज कर देना है और आप खुद पढ़ेंगे. प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है. आई होप यू विल एंजॉय इट एंड ट्राई टू सिंग टू. ओके. सो लेट्स मूव. ये सॉन्ग्स के ऊपर कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आपने खुद करनी है. सो देन वी हैव लाइक दिस इज, आपने यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपनी जो स्पीकिंग की एवेल्युएशन है, ये सारी आपने खुद करनी है. ओके. सो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, नहीं आती, यू कैन गेट बैक टू मी, यू कैन आस्क मी. क्या मैं यहाँ पर, वी आर हैविंग द कंफ्यूजन राइट हियर. अगेन दिस इज अ स्पीकिंग एक्टिविटी. यू हैव टू लाइक सिंपली, आप अपनी रिकॉर्डिंग करके यू कैन सेंड इट टू मी. ओके. एंड देन आई विल जस्ट गेट बैक टू यू. दिस इज द राइटिंग एक्टिविटी. ये भी आप सारी अपनी लिखेंगे, 5 to 6 lines ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन. ओके. So then we have a homework activities. So this is what we plan at the end of each class. Yeah, but you can pause the video. You have to complete all the homework. So finally, we have a checkpoint of lesson 2. Like, can you count from 0 to 20 in French? Conjugate. ये 6 forms हैं. Use F in a sentence. Ask how are you formally, and then ask how are you informally. Give 3 different responses to Sava. Introduce myself in 5+ sentences. Say my name, age, country, job. Greet and farewell properly. अगर कोई भी चीज नहीं आती तो you can go back to that lesson again. So इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा ये भी क्विज है. How is the French letter G pronounced? आप बताएं. बे, जे, जी, दे. So it's going to be yes, J. Next, which of the following pronunciation rule is correct according to the workbook? The French letter H is always voiced. The French letter R is always silent. The French letter H is always silent. The French letter R is always voiced like English. So you have to now just tell me which of the following French rule is correct according to the workbook. The French letter H is always silent. What is the formal French translation for the word please? S'il vous plaît, merci beaucoup, excuse-moi, s'il te plaît. So it's going to be s'il vous plaît. Which greeting corresponds to see you tomorrow in French? We say à demain, bonne nuit, au revoir, à bientôt. À demain. What is the correct translation of I am 20 years old? Je suis 20 ans, j'habite 20 ans, j'ai 20 ans, je m'appelle 20 ans. The answer is j'ai 20 ans. Which one of the following represents the French compound number 17? 7, 10, 18, 17, 19. 17.
Which of the following French number is spelled with silent consonants G and T? So which one is that? So 8, 9, 7, 20, 20. You can spell it as well, okay? Which French words correspond to the numbers in the mathematical equation 5 plus 6 est 11? So 5 plus 6 is 11. So let's see 5, 6, 11. Voila. Bravo. So which French word represents the number 14? 14 is called 14. 15, 4, 13 is 14. Next is which sequence represents the consecutive numbers 11, 12, and 13? So it is 12, 13, 14, 11, 12, 13, 11, 13, 15, 10, 11, 12. 11, 12, 13. Okay. What is the correct tense? What is the correct form of the verb être for the subject pronoun nous? With nous, what do we use? Sont, sommes, suis, être. We use it? Yes, sommes. Complete the sentence with the correct form of the être, like vous dash étudiant. Vous sommes étudiants, vous sont étudiants, vous êtes étudiant, vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant. Which subject pronoun must be used to represent a mixed gender group of they? Nous, elle, vous, il. So it's going to be, yes, il. According to the workbook, when should you use the informal pronoun tu instead of vous? So we use it informally, क्या कहते हैं, with friends and family, with strangers and elders, with teachers and professional, with employers and customers. So informal pronoun is used with friends and family. Correct. Which expression represents the formal way to ask someone how are you? Et toi, ça va? Comment vas-tu? Comment allez-vous? तो formally अगर हमने पूछना होगा तो we'll be saying yes, comment allez-vous? According to passage A, how old is Paul? You have to guess. 28, 25, 20, 30. Let's see the hint. It's 1 week. 1 week is, yes, 28. But आपने go through the passage again and check it out. According to the passage A, what is Paul's profession? Ingénieur, engineer, médecin, étudiant, professor. Let's check out the hint. He says it's similar to the word engineer, so it's going to be ingénieur. According to the passage B, where does Yasmin live now? Montréal, Lahore, Lyon, Maroc. Hint को देख लेते हैं. He says habite à and venir de habite à l'est. I think it was Montréal. आप दोबारा देख भी लीजिएगा. Yes, it is Montréal. According to passage B, what language does Yasmin speak? French and Spanish, French and Arabic, French and English, French and Urdu. So she says like je parle, and then let's go with like French and English, I think. No, it's French and Arabic. Okay. What is the correct French translation for the sentence we are friends? Nous sommes amis, ils sont amis, nous sommes étudiants, vous êtes amis. So we are for use, we use nous sommes, and étudiant is called student, so you're left with nous sommes amis. Okay, so bravo. So these were the 20 quiz. Like we made one mistake, but made bravo. That's a good thing. So that's it for today's lesson. So these are the advanced extension activities for you as well. So, okay, so you can go through that again. If you have any confusion, you can ask me, okay? So like in the start, you will find out my WhatsApp number. So like this is you find all the informations about me. This is my WhatsApp number. You can ask me, and you can enroll for the upcoming batches and sessions. Like upcoming batches, admissions are open. You can enroll yourself for like A1, A2, B1, B2, and then whatever your objective is, either TEF, TCF, DELF. Okay. Merci beaucoup. Take great care of yourself, and bonne journée, and see you in the next lesson. Bye bye. How do we say bye bye in French? We say au revoir.